Hello friends, so in this lecture we are going to discuss about fundamental rights, and we will be concluding complete chapter of the fundamental rights in almost 5 to 6 lectures, and this is the part of GS 365 course that we are running out on our YouTube channel Incredible Abhishek. So I hope you have been watching these lectures and these lectures are helpful for you all. तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये lectures useful हो रहे हैं. So from today onwards, we are going to start with the fundamental rights. Okay. So we will be discussing about the fundamental rights. Okay. And you might be knowing that the fundamental rights comes under the part 3 of the Indian Constitution. Which part? The part 3 of the Indian Constitution. So we can, in a layman language, we can say that the rights that have been given under part 3 of the Indian Constitution are being referred as the fundamental rights. Okay. Before starting this lecture, I would like to give you certain preconceptions as well, so that this lecture will be more useful for you. That fundamental rights is a chapter which is of a more practical nature, because you will find that fundamental rights are being used in your day-to-day life. So I would strictly recommend you that don't compare whatever the rights that are being given with the practical life. Okay. You will might find certain cases that these rights are not being fulfilled, but we are only for the examination point of view, and we are only talking about the theory aspects, so that will be the case. Almost you will find 90 to 95% are okay. In some part you will find certain glitches are being there, and we will be discussing that as well in this chapter. Okay, so let's get started then regarding the fundamental rights. तो आज हम fundamental rights को देखेंगे, ठीक है. So when we start with this chapter fundamental rights, firstly, as we have said that Indian Constitution is a bag of borrowing, so we have taken certain provisions from here and there. So from where we have taken the fundamental rights, हम लोगों ने fundamental rights जो है वो कहाँ से लिया है. So you might be knowing that there is a American Constitution, and in this American Constitution there is something called as Bill of Rights. So Bill of Rights is similar to the fundamental rights. Basically it means that there are certain rights that have been clubbed together in the Bill of Rights, and from there we have also taken our fundamental rights. That doesn't mean that we have just copied the American Constitution's Bill of Rights. We have taken into consideration the Bill of Rights and we have modified according to our needs. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स है उससे पूरी तरह से जो राइट्स है उसे कॉपी कर लिया है. हम लोगों ने उससे इन्फ्लुएंस लेकर अपने फंडामेंटल राइट्स को अकॉर्डिंग टू द इंडियन नीड्स वी हैव डिजाइन्ड इट आउट. ओके, so that is there. Now there is a question. Okay, there is a question that arises that these are the rights. Okay, and what are rights? We have discussed in the introductory lectures as well that rights are a claim of a citizen on an individual. Rights, what is right? Right is a claim of a citizen on a state. Okay, state के ऊपर जो claim होता है उसे हम right कहते हैं, ठीक है. So why these rights are being called fundamental? This is the question, that why this is called fundamental. This is a very beautiful question that we can ask, that is right को fundamental क्यों कहा गया है? Why this is fundamental? Is it the case that these rights are being given under the fundamental law of land, that is constitution? Is it the case that why we are saying that these rights are fundamental rights? क्या ये केस ऐसा हो सकता है कि जो fundamental rights हैं वो हमारे लैंड के फंडामेंटल लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ये राइट दिए गए हैं इसलिए हम इसे फंडामेंटल कह रहे हैं? द आंसर इज नो. हम इसे इसलिए नहीं कह रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स दिए गए हैं इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स हैं. व्हाई वी आर सेइंग सो? वी आर सेइंग दैट these rights are fundamental as it is fundamental for a development of individual. How can we say so? So this is an asset. This is an asset of an individual for his development growth. Development could be anything: physical growth, spiritual growth, political growth, any growth could be there, or intellectual as well. हम क्या कह रहे हैं कि ये अपने आप में फंडामेंटल राइट्स एक एसेट है. दिस इज अ काइंड ऑफ एसेट. देयर आर टू थिंग्स, एसेट एंड लायबिलिटीज. Assets are very much useful for your what? Assets are very much useful for your development purpose. So ये क्या है? अपने आप में एक एसेट है जिसकी मदद से कोई भी इंडिविजुअल अपने फुलेस्ट फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ
पोटेंशियल अचीव कर सकता है. हाउ कैन वी से सो? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि these are the assets? If we will say for the development of an individual, what is required? Education. So you can be discriminated from getting education. You can be discriminated. So you will not be discriminated because we have right to education. We are giving you right to education. We are giving you surety. You have been given freedom of profession. You can profess any of the jobs or any of the profession that you want. You have been given that right against discrimination. You will not be discriminated when you are trying to get a job. So this is what? These are the things that are necessary for your development. For development, you require education. From development, you require job, you require profession. These are the things. If you talk into consideration the Article 19, Article 19, what it confers? Article 19 confers that we are giving you a right to freedom of speech and expression. We are giving you right to move anywhere. So would you be able to do so if the right has not been given to you? So this is the case, that this is a kind of asset that has been given to you, and with the help of these assets, you can achieve your fullest potential growth that we are talking about. So this is the case. Is it the case that only these are the assets? That's why we are saying it is a fundamental right? No. In addition to that, there are many things for which we are calling it as fundamental rights. These rights prevent the state from becoming arbitrary. Means state cannot take arbitrary actions. State cannot be authoritarian. State को authoritarian होने से कौन रोकता है? Fundamental rights. ठीक है, ये किस तरह से we will be talking when we will be talking case Ananda Bharti case and basic structure of doctrine. We will be talking this into consideration. Okay, so can we say that this is fundamental? This is fundamental for the creation of a civilized society. For the creation of the civilized society. Civilized society के लिए ये अपने आप में क्या है? Fundamental. This is fundamental for creation of a civilized society. Civilized society बनाने के लिए ये fundamental है. Okay. So we can say at last that fundamental rights are the cornerstone of Indian democracy. So I hope you have understood why it is being called as fundamental. I have given you ample amount of evidences that why it is called fundamental. And this is not only that. There are many things for which this is called fundamental, but this is enough for your examination point of view. That the fundamental rights are being considered as fundamental because with the help of these fundamental rights, an individual can achieve its physical, spiritual, political, any kind of growth that he wants to achieve. And it is important for the creation of a civilized society. And in addition to that, fundamental right has been considered as the cornerstone of the Indian democracy. Okay. There is something called as part 4. Okay, we understood that part 3 of the Indian Constitution deals with a fundamental right. Part 4. What do we confer in the part 4? That is DPSP, Directive Principles of the State Policy, and this is what fundamental rights. Okay. So part 3 plus part 4. This we will be discussing in the DPSP as well. That part 3 and part 4 together constitute the conscience of the Constitution. What do we mean by conscience of the Indian Constitution? Means the intellectual component of the Constitution. Okay, so this is an intellectual component of the Constitution. We will be discussing that when we will be completing the DPSP, and then we will be comparing these things and we are clubbing together. So this will be highly scientific, so don't worry at all. Okay, so we will be discussing that in a detailed manner. Now we need to understand that. Okay, we need to understand that what is the basic difference when it comes to the difference between the fundamental rights and the ordinary rights. Okay, so what is the basic difference between a fundamental right and an ordinary rights? Both are rights. Okay,
but one right has been considered as fundamental for the human development, and other is considered as the ordinary right. What is the basic difference? In a layman language, we can say that the rights which are given in the part 3 of the Indian Constitution are being considered as the fundamental right, and other rights which are not given in the under the part 3 of the Indian Constitution, and apart from those, all the rights are being considered as the ordinary. So this is a very layman language that would be there. Okay. Other than that, what we can say, that fundamental right, this is the first, that was not important, but from here whatever we are going to study, these things will be important for your examination point of view. इसके आगे जो भी हम चीजों को डील करेंगे, that would be important for your examination point of view. Okay. So when it comes to the fundamental right, जब हम fundamental right की बात करते हैं, तो fundamental rights are being protected by the constitution itself. Means the fundamental law of land is protecting the fundamental rights. Okay, whatever I want to say, that if you are not getting the fundamental rights, then there is something called as Article 32. With the help of Article 32, you can go directly to the Supreme Court. That okay, my rights are not being taken into consideration. So this is given to you. But in ordinary rights, this has not been given. If you have a violation of your ordinary rights, you can go to the subordinate courts or High Court, but not directly to the Supreme Court. You will not be allowed. But when it comes to the fundamental rights, you are being directly going to the Supreme Court, and Supreme Court is going to take into consideration of your case. So here we can say that, okay, one thing is that you might not be knowing, some student might not be knowing about the Article 32. So this is the part of fundamental right. We will be dealing with this right to constitutional remedies, in which writs will be discussed, writs jurisdiction. So that we will be dealing. Okay. One thing that I want to make clear, that the chapter that we are dealing with, the fundamental rights, is highly interlinked chapter. देखिए fundamental rights जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा interlinked chapter है, तो इसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा करना मुश्किल है. इसे अगर आप पूरे तरह से, जब एक बार पूरे चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते, उसके बाद जब आप लिंक करने की कोशिश करेंगे सारी चीजों को, देन इट वुड बी मोर यूजफुल फॉर यू. ओके, सो दैट इज द थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग. देन व्हाट आर द अदर थिंग्स? Other things are that when we are talking about the fundamental rights, okay, if you want to have a change in fundamental rights, अगर आप fundamental rights में क्या करना चाहते हैं, कोई भी changes करने चाहते हैं, तो आपको constitutional amendment करनी पड़ेगी, वो भी किसके अंतर्गत? आर्टिकल 368 के अंतर्गत. आप easily इसे change नहीं कर सकते, उसके लिए भी फिर special majority की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, मेजॉरिटीज वाले में. लेकिन अगर जब हम ऑर्डिनरी राइट की बात करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से इजीली ये चेंज हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज द केस. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेचर. व्हाट इज दैट? नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. हम यहां पर नेचर को डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट इन नेचर? The answer is no. They are not absolute. They are restricted. Restrictions are being imposed on every fundamental right. Okay. So they are not every. There are certain that are absolute. Like Article 17 is absolute for you. So these are restricted rights. Okay. Fundamental rights are not absolute, they are restricted to a reasonable restrictions. What are those restrictions? We will be dealing when every article by article we will be dealing with the restrictions as well. जब हम आर्टिकल बाय आर्टिकल देखेंगे तो वहां पर हम restrictions को भी डील करेंगे. ठीक है. Other than that, fundamental rights provides protection to an individual against the state that we have dealt. Why it is called fundamental? Okay, and there are certain rights as well which gives an individual protection against an individual also. So there are certain rights which gives you protection
against the individual, and there are certain rights which gives the protection against the state as well. Okay, so let's get started then. There is the first article, that is called Article 12, which is having the definition of state, but we will be dealing this later. हम इसे बाद में देखेंगे. हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं आर्टिकल 13 से, बिकॉज वी आर गोना डिस्कस अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. जस्ट अ मिनट. ओके, doctrine of eclipse. Okay, have you ever read about eclipse? If you have read about geography, definitely you came across the eclipse as well. So that concept will be used little bit, but not that. So let's get started then. There is something called as article number 13 clause 1. Okay, so what is article 13 clause 1? Article 13 clause 1 states that all laws that are being enforced before the commencement of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले जितने भी लॉज बनाए गए हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, इफ दे आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड. They are being considered as unconstitutional or void. This is what the Article 13 Clause 1 states. But there was a case, and these cases are not important for you. ये cases आपके लिए important नहीं होंगे. भीकाजी नारायण versus State of MP case, and that was in 1955. Okay, so MP case 1955. There came across the concept of doctrine of eclipse. What it means? Doctrine of eclipse states that, doctrine of eclipse ये कहता है कि हम किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनवॉइड ना डिक्लेयर करके हम उसके ऊपर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. दैट इज, वो डॉर्मेंट हो जाएगा. दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल. वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इन फ्यूचर. अगर मान लेते हैं कि इसमें किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स में किसी तरह का अमेंडमेंट होता है और उसके बाद अगर ये लॉ वैलिड हो जाता है तो उसके बाद ये वर्क करेगा. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. लेट्स से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, लेते हैं कि लेट्स से दिल्ली इज बीइंग देयर. ओके, सो ऐसा किया जाता है, एक लॉ बनाया जाता है कि किसी भी स्टेट के पर्सन्स को एंटर नहीं करने दिया जाएगा दिल्ली में. ठीक है, या फिर नो वन इज अलाउड इन दिल्ली. आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते. इस तरह का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में है? डेफिनेटली. सो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड होना चाहिए. बट अगर इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यूज करते हैं तो इस बेसिस पर ये क्या होगा? डॉर्मेंट हो जाएगा. लेकिन ये पूरी तरह से डॉर्मेंट नहीं होगा, बिकॉज अगर आपको पता हो 19 जो है वो सिटीजन्स को सिर्फ है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है. तो अगर ये लॉ पास होता है तो फॉरेनर्स विल नॉट बी अलाउड इन दिल्ली. दिस वाज टोटली एन हाइपोथेटिकल. ठीक है, सो डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन दिस. बट अब समझ पा रहे हैं कि फॉरेनर्स विल नॉट बी अलाउड. तो इस तरह से अगर कोई लॉ बनता है जो कि सिर्फ सिटीजन्स के राइट्स को अगर ये करता है तो फिर डेफिनेटली हम उसे यूज कर सकते हैं. और अगर मान लेते हैं सभी के लिए है तो फिर उसे बाद में हम यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या करता है? वर्क करता है. अंडरस्टैंडिंग दिस, देन देयर वाज अ केस, एंड द केस was, these cases are not important, but I'm just giving reference so that you can understand. Deepchand versus state of UP case, that was in 1959, just 4 years after the Bhikaji Narayan case. And in this case it was said that देखिए, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इफ देयर इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है तो उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड ना डिक्लेयर करके उसके ऊपर एक्लिप्स का यूज करेंगे. ठीक है, व्हाट इज एक्लिप्स आप समझ चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. लेकिन अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी कि कोई ऐसा लॉ
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के बाद, यानी अगर लेट से अभी बनता है 2016, 15, 14 या फिर इधर 2022 इस टाइप में आपका बनता है, तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो इसे डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस पे एक्लिप्स यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज इसे माना जाएगा कि ये इंटेंशनल है, बिकॉज दे आर नोइंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स, दे आर नोइंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स बट स्टिल दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट आउट, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। बट इसे फिर बाद में चैलेंज किया गया और देयर वाज अ केस कॉल्ड एज अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ Gujarat case, and this was a case in 1974. Okay, almost 14-15 years after, and said that कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी अगर है तो उस पे भी एक्लिप्स ही यूज करेंगे, ना कि डायरेक्टली उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस है। तो अगर हम प्रेजेंट स्टेट को देखें तो प्रेजेंट स्टेट ये कहता है कि अगर कोई लॉ बनता है और वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है तो उसे डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड नहीं डिक्लेयर करके उसे डॉर्मेंट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अंडरस्टैंडिंग दिस और नो? Now comes the amendability of the constitution. Amendability of the fundamental rights. Now we will be discussing about the amendability of the fundamental rights. For that matter, we need to discuss about Article 13 Clause 2. 13 Clause 2 में आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट की बात कही गई है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें यह कहा गया है कि इफ द state should not make a law which is against the fundamental rights. स्टेट जो है कोई भी राइट ऐसा ना बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में, ठीक है, किसी भी प्रकार का लॉ की बात करें, स्टेट शुड नॉट मेक एनी लॉ व्हिच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। बट आपको पता होगा 1951 में ही क्या हुआ, दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई। अब देखो, सबसे पहले तो 15 क्लॉज 4 ही आ गया, वो भी अगेंस्ट में था, फिर 19 क्लॉज 6 आ गया, वो भी अगेंस्ट में था, फिर 9th शेड्यूल आ गया। 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल इज अ लॉकर, जिसमें आप कोई भी लॉ बना के इसके अंदर डाल दे, उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स का ये नहीं पड़ेगा, यानी वो अगर फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज भी कर रहा है तो दैट डजंट मैटर। तो इस तरह के बहुत सारे लॉज बना दिए गए। अब ये सारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज कर रहे हैं, अगेंस्ट में वायलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर क्या हुआ? इसके लिए देयर वाज अ केस, डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फ्रॉम द आर्टिकल कॉल्ड एज 32। तो देयर वाज अ केस व्हिच वाज केस एंड वन ऑफ द फेमस केस आई वुड से, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के फेवर में अपना फैसला लिया और कहा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ, जो कि 13 क्लॉज 2 में मेंशन है कि कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट या कोई भी ना बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स के को एब्रेज करे। इस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नो, क्योंकि आप पता होगा कि दैट इज पार्लियामेंट इज हैविंग टू काइंड्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। दो तरह के लॉ बना सकता है, एक तो वो ऑर्डिनरी बना सकता है, दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बना सकता है। तो उसके पास ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर्स आपको पता होगा 368 में आता है, ठीक है। तो इसके लिए 13 क्लॉज 2 वैलिड है, लेकिन इसके लिए दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए शंकरी प्रसाद केस में पार्लियामेंट ने यह कहा कि लॉ, जो टर्म वहां पे यूज किया गया या वर्ड यहां पे यूज किया गया है, वो लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ओके, बट व्हाट हैपेंड लेटर, यहां पर ये चीजें कंप्लीट हुई। उसके बाद वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दैट यू विल बी टॉकिंग अबाउट द गोलकनाथ केस। ओके,
गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल यहां पर इस बात को चैलेंज किया गया, यहां पर 368 को ही चैलेंज कर दिया गया। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये कही गई, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो वहां पर आर्टिकल 368 में दिया हुआ है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दिया गया है कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां पर इस बात पे चैलेंज किया गया कि आर्टिकल 368 तो सिर्फ आपको प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए, बट ये पावर नहीं देता, इट डजंट गिव्स यू द पावर, पावर ही मिसिंग है, इट डजंट गिव्स यू द पावर। इसी कारण से पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू मेक constitutional amendments. So later on in 1971 there was the 24th Constitutional Amendment Act और इसके अंतर्गत इसके टाइटल को चेंज किया गया और इसमें फिर ऐड किया गया प्रोसीजर to amend the constitution and power to amend the constitution, or we can say that procedure and power to amend the constitution lies with the parliament. Understanding this or no? So that's what it is. Now अब देखिए यहां तक अगर आप समझें, यानी 1971 तक क्या हुआ है, अब ये समझो 1971 तक ये हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हैं, उसे एब्रिज कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको ये नहीं होगा, ठीक। बट उसके बाद फिर लैंडमार्क जजमेंट आता है ऑफ केशवानंद भारती केस, यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस केस इन 1973। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, ठीक है। ये सबसे मतलब अभी तक की सबसे बड़ी बेंच में ये केस हुई थी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बट हम यहाँ पर सिर्फ अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को कहा गया कि ठीक है 368 में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सकते हैं, दैट्स फाइन। बट यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So there was this called as basic structure of the constitution। यानी यहां पर यह कहा गया कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर सकते हैं that could take your fundamental right, that could abridge the fundamental right, but you cannot make any constitutional amendment act that will be taking into the basic structure of the constitution। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को तो हम लोग यूजुअली डिस्कस करेंगे एक पूरा फुल फ्लेजेड चैप्टर में, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके बहुत सारे पिलर्स हैं एंड ऑन दोज पिलर्स इट हैज बीन मेड। आप ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कर सकते जो कि इस पिलर यानी जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वही खत्म हो जाए। ऐसा किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल in our country there is supremacy of constitution, हम लोगों ने डिस्कस किया, तो you cannot abridge that। we have separation of power, you cannot abridge that। we have checks and balances, you cannot abridge that। we have independence of judiciary, we cannot take that। मैं आपको एक independence of judiciary बताता हूँ। there was a commission that was being made in 2015, एक constitutional amendment act किया गया और उसके बाद एक बनाया गया national judicial appointment commission और कमिटी। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया क्योंकि ये अगेंस्ट में था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यहाँ पर इस कमिटी का गठन इसलिए किया गया था ताकि हम जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ये सब में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं जजेस के, चीफ जस्टिस के, वो सारे को कंट्रोल किया जाए, बल्कि ये अगेंस्ट था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, तो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। अगर ये केस नहीं हुआ होता, दैट इज 1973 केशवानंद भारती केस, तो अगर आप 67 तक पहले जाएंगे गोलकनाथ केस तक, तो इसे वैलिड माना जाता, बिकॉज पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट फ्रॉम द 19